Hello, assalamu alaikum everyone. कैसे हैं सब? I hope everyone is fine in your family. Alhamdulillah, everyone is fine in my family. We're all doing good, all safe, staying home, staying safe. So I've been staying home for the last 2 weeks. I haven't been out for the last 2 weeks. मैं 2 हफ्ते से कहीं बाहर नहीं गई. It's just like it's dragging on, guys. It's like it is so boring. I'm one of those people who go out every day. Not going out. I go out every day. Like जैसे काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, things like that. So I go out every day. So आपकी normal routine से हट के जब आप when you do things, it's just like so boring. It's like you don't feel like doing anything in the house. Anyways, forget about that. Let me know. Anyways, let me know what you guys been up to. What have you guys been doing? If you guys been staying home, आप लोग का क्या routine है? क्या कर रहे हैं आजकल आप? और कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं घर के काम करने में और दूसरे काम करने में. प्लीज़ डू लेट मी नो बिकॉज आई डू नीड सम ऑफ द आइडियाज. थैंक यू. प्लीज लेट्स टॉक अबाउट टुडे गाइस. एज यू कैन सी आई लुक लाइक गोस्ट राइट नाउ. all I've done is my foundation at the moment because a lot of people, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी. Not I don't mean बहुत सारे लोग as like thousands and millions, only the people who watches my video. उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी about the eye makeup and contouring. So today we're gonna talk about eye makeup. I did one of my videos before about the eye makeup, which was really basic. It was just one shade eye makeup, one brown shade. I believe is staying safe, play safe. तो we're gonna do again. आज हम एक और बहुत बेसिक सी वीडियो आई मेकअप के करेंगे. तो जो लोग हैं जिनको the people who don't know how to do any of the eye makeup, और ब्राउन लगाएं, उसके अराउंड आप प्ले कर लें, उसको आप जो है ब्लैक के साथ मर्ज कर लें, उसको आप पीच के साथ उसको मर्ज कर लें और बीच में ग्लिटर लगा लें. डू थिंग्स लाइक दैट. बट इफ यू डू ब्राउन, you can put it on with any whatever you're wearing. Just it goes with everything. Okay, so what I'm going to be doing today, I'm going to be using brown shade again today. I'll be just showing you more variation कि आप brown में और क्या कर सकते हैं. So all I have, let me show you what I have. I was actually sorting out my makeup other day, a few days ago, because I had nothing to do. I thought, let me sort out my makeup. I've come across this really nice, ZOEVA का little palette. It's got really nice shades. Can you see? इसमें कितने प्यारे shades हैं. तो इसमें ये brown shade है, फिर इसमें brown glitter भी है. So let's see what we can do with this brown shade today. As I told you, I've done my foundation already. So what I'm gonna do, I'm gonna put it on. ये जो है ये setting powder है. I'm just gonna use little bit setting powder just to put it under my eye, ताकि अगर थोड़ा सा अगर कुछ शेड वगैरह गिरता भी है हम क्लियर ऑफ कर सकें. Like this. अगर आपके पास सेटिंग पाउडर नहीं है तो आप जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है फेस पाउडर, उसको थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा लगा लें ब्रश से. डोंट गो टू मैट विद इट. बहुत ज़्यादा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें ताकि आप उसको बाद में डस्ट ऑफ कर सकें. यू कैन सी ऐसे करके मैं लगा रही हूँ और थोड़ा सा आंखों के ऊपर भी जो मैंने कंसीलर लगाया था उसको सेट करने के लिए. Okay, the first thing I'm gonna do, just to tell you guys, मैंने अपनी eyebrows जो है वो black and brown mix करके shade से set कर ली हैं already. Also, eyebrows play a really big part in your makeup. Eyebrows जो है play a really big game in your makeup. तो make sure you do eyebrows really nicely. आजकल जो है thin eyebrows is not in trend. Do thick eyebrows. एक तो आपके पास already chance है आजकल. When we staying home these days, grow your eyebrows. जिन लोगों की thin eyebrows हैं, you can try and grow them thicker. क्योंकि आजकल जो है thick eyebrows जो है वो ज़्यादा trend में है. So make them go thicker. It looks really nice. They do play a really big part in your makeup. Foundation and eyebrows do play a really big part in your makeup. So what I'm gonna do first, I'm gonna get a pencil and I'm just gonna I love doing this part. I think it makes your eyes go open more.
I just love doing this part. I know it's a little bit painful, but I just love doing it. Don't cry, don't cry. I'm fine now. Okay, okay, as I said, this little palette, let's always start with the lighter shade. Always go lighter to dark, light then dark. That's how we go. तो पहले मैं जो हूँ अपनी आईज पे ये वाला पूरी लिड पे सेट करूँगी, ये वाला शेड। कोई भी ब्रश ले सकते हैं आप, whatever brush you feel comfortable with. So I'm just gonna go. Okay, let's do the brown now. मैंने अपना एक फ्लैट ब्रश ले लिया है और मैं इससे ब्राउन शेड लगाऊंगी। Can you see? Falling out. Even though मैं dust off कर रही हूँ, still falling out. It doesn't matter how expensive your shades are. जितने महंगे हैं, जितने सस्ते हैं, they all fall out. This one is quite expensive, guys. Okay. मैंने अब ये दूसरा पैलेट लिया है मैक का। मैंने ये वाला शेड मैं अपने ब्लेंडिंग ब्रश पे उठाऊंगी एंड वी गोना डू दिस ऑन द कॉर्नर्स नाउ। आउटर कॉर्नर्स पे हम भी लगाएंगे थोड़ा सा। लेट्स सी हाउ इट गोस। जस्ट मेक अ लिटिल वी को थोड़ा सा ऊपर ले जाए, हाफ तक। कैन यू सी? एक एक डेप्थ बन गई है। तो ये यहाँ इज एक्चुअली लाइक अ सी, यूं करके। यू सी? सी बन गया ये एक। ओके, तो ये सी बन गया है। बिफोर यू ब्लेंड दिस आउट, दूसरी आंख पे भी सेम लगा लें। आई एम गोना डू एग्जैक्टली द सेम ऑन द अदर आई एज वेल। और ये वाला भी बिल्कुल ऐसे ही कर लें। तो जस्ट इन द मिडल आई पॉप दैट। दूसरी आंख पे भी सेम लगा लें आप। What I'm gonna do guys, now मैं अपना ये जो मैंने शेड लगाया था सेम शेड लेके मैं दोबारा उस क्रीज को हाईलाइट करूंगी जो मैंने क्रीज बनाई थी। क्योंकि हमने बीच में एक शेड लगाया है, तो वो जो डार्क शेड था उसको हम दोबारा डिफाइन करेंगे। उसको दोबारा डिफाइन करने के बाद मोर ब्लेंडिंग इज द की गाइस। The more you blend it, the more it's gonna look good. You see guys, that's why I put the setting powder underneath. You see how much fallout? I do prefer sometimes doing my foundation after. That is the only reason why I do my foundation after, ताकि जितना भी fallout हो आप उसको वाइप कर सकें।
Okay, the blending part is done. Now here comes the eyeliner. I'm still using my what do you call it, L'Oreal eyeliner, but I've ordered a new one. As I said, I'm gonna be trying different ones now. I've ordered a new one a couple days ago. Hopefully, inshallah, I'm hoping it's gonna come tomorrow. So if it comes tomorrow, I'm gonna do a new video about it. और मैंने काफ़ी सारे न्यू फाउंडेशन भी ऑर्डर किए हैं. As soon as they come, I'm gonna do a new video about them. और मैं I will show you guys कौन कौन से मैंने फाउंडेशन ऑर्डर किए हैं, कौन से शेड्स ऑर्डर किए हैं, कौन से कंसीलर ऑर्डर किए हैं, और मैंने एक न्यू लाइनर भी ऑर्डर किया. Let's do the liner now. You don't have to do any flicks or anything. Just do normal eyeliner. अगर आप चाहें तो उसको भी ब्लेंड कर सकते हैं. अगर चाहें तो वैसे ही लाइन छोड़ दें. As I said last time कि just do like a normal line. नीचे देख के I'm looking at my little mirror. God. Asu, Asu. Asu, look up. Don't look down. Let's do it. That's my eyeliner. दूसरी आँख को भी सेम लगा लें आप. I like my eyeliner a little bit on the thicker side. मुझे थोड़ा सा thick eyeliner पसंद है. That's why I always do my eyeliner on a little bit thick. Next part जो है वो optional है अगर आप चाहें तो. But I can't leave it like this. I love doing it, so I will do it. Pencil. अपनी. Make sure you put on the waterline as well. Don't leave it empty. Next part is I'm gonna use my mascara. Sorry. This mascara I'm gonna be using. ये है मुझे sample आया था कहीं से Urban Decay का mascara. Let's do this. I don't know how good this is. This is the first time I'm using this mascara, guys. So I have no idea what is it like. Oh my god, it's amazing. I'm liking it. I'm loving this mascara, guys. What's gonna happen जब ये finish हो जाएगा? Okay, वो okay guys, just to finish it off, कोई भी आपके पास कोई भी highlighter, कोई भी glitter जो भी है, आप अपने inner corner में हल्का सा उसको लगा लें, बिल्कुल हल्का सा. तो मेरे पास मैं ये वाला लगाने लगी हूँ. Whatever, जो भी मेरे हाथ में आया है अभी फिलहाल. Just to give a little. Blend it out. और थोड़ा सा
यू कैन सी कि मैंने कितना थोड़ा सा लगा रही हूँ कि फील भी नहीं हो रहा। Okay, let me finish off my whole face as this whole video was only about the eye makeup. This is the eye makeup, guys. Let me finish off my face and I'll get back to you के end में end result क्या था. Let me come back to you. Okay, this is the final look, guys. Let me know कि आप लोग को eye makeup कैसा लगा. And my lipstick, I've already gone out my way with the lipstick. I normally don't do these sort of lips, but maybe it's just my top. I was wearing my maroon top, that's why I thought I could just get away with it. But I don't think so. I think it looks quite too dark. Let me know कि आप लोग को मेरी lipstick कैसी लगी. But main thing is कि let me know कि आप लोग को eye makeup समझ आया या नहीं आया. अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइए. And that's it, guys. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब इट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.